जाते हैं सभी एक स्थान पर हैं। तो जब जो अन्य संस्कृतियों अनुवाद के फलस्वरूप जो अन्य संस्कृतियों के जो विद्वान थे उन्होंने जब इस व्याख्या को सुना तो उनका जो है उनका मानस उद्वेलित हो उठा, और मानस उद्वेलित हो उठने से उन्हें एक तरह से जिसे हम आज के समाज में ब्रेन स्टॉर्मिंग Welcome viewers to this teleconferencing session. In this session, we will be discussing about the MSc Geoinformatics program, which has been recently launched by the School of Sciences. So in this session, along with me, myself, Professor Benidhar Deshmukh, and there are the Director of School of Sciences, Professor Minan Mishra ma'am, and Dr. Kakule Gogoi, Professor in Geology. So this session we would be discussing about MSc Geoinformatics program, and now let us start with what is geoinformatics. So I'll give you a brief background about it. So we'll start with giving you an idea about how we use this technology, and then we will give a formal background later on. So see, all of us are aware that we use various kinds of maps. Particularly, we use Google Earth images or the maps which are there in the ISRO's Bhuvan geoportal, as you can see in this slide. So this is a two-dimensional view of the India and the surrounding parts. So this is a portal of snapshot from the ISRO's Bhuvan geoportal. Therein you can see there are some roads, etc. Some are marked. Now whenever we use say order food from some food delivery apps, or we say book taxis, and then we know what or where the vehicle is and how much time it is going to take to reach us.
So for this, in all those apps they use two things. One is the location information, and that location information is also used along with the map. So this location information is the primary thing, and the map that you see is a form of GIS platform wherein those maps are displayed. So using that, we know where this vehicle it is, or when the food delivery person is going to reach, how far it is, and in what time it will be reaching to us. In the next slide that you see, this is a snapshot from Google Earth, and this is showing India and adjoining regions in the 3-dimensional and the globe. So most of us, we use this kinds of portals or apps for looking at the places where we reside or where we work. So this is about it. Now in this session, we would be discussing about geoinformatics. Now here, and this is what is the basic of the geoinformatics. So in this session, we would plan to first give you a background, and then also about the how this MSc Geoinformatics program is aligned with the new education policy 2020. Then some features of that, like entry exit options, objectives of the program, the target groups, and the program details, program structure, and towards the end we will be discussing about the employment prospect of this program, and also about the counseling, assignment, examination, and we will end the session by giving you the highlights of this MSc Geoinformatics program and the special instructions specific for this program. So now I request Professor Minan Mishra ma'am, who will give you an idea about how this program is aligned with NAP 2020 and about the program objectives. Thank you, Professor Deshmukh. Before discussing further, I just want to take you back to July 2014 when we started postgraduate certificate in geoinformatics. Actually, in 2013, CBSE board throughout India, they started courses on some vocational courses on geospatial technology at +2 level, and this was done on the recommendation of MHRD. Actually, MHRD's report that came in 2013, that was assessment of manpower requirement and skill in geospatial technology. So based on those recommendations, 10+2 CBSE board, they started with vocational courses. So in that scenario, we launched PGCGI, that is postgraduate certificate in geoinformatics, in July 2014, and since then it is running very successfully. And also based on the mails received and also on the expert committee that we had that time, they recommended that they said that let us proceed with developing various programs pertaining to geoinformatics in a modular fashion. So in 2023 January, we launched a postgraduate diploma in geoinformatics, and I'm happy to share that in this session in July 2023 we have launched MSc in geoinformatics, and this program, it is in accordance with NEP 2020. And all the 4 pillars of NEP 2020, that is multidisciplinary approach, and then skill enhancement, experiential learning, and then modular approach, they are very well covered, or they have a substantial input in this program. See, because it is geoinformatics, so we involve
all disciplines like geography and then cartography and physics and then geodesy and so many other disciplines are involved. So it has a multidisciplinary approach. Obviously, it is related to skill enhancement, and then we give hands-on training in this program. And lastly, we have a modular approach. Let me tell you, like we have multiple exit and entry options when a student completes 6 months. So with 20 credits, the student can exit with in the after first semester with PG certificate in geoinformatics, and then PG diploma in geoinformatics when a student completes 2 semesters courses, that is 40 credits, and then the student can also take a lateral entry into PG DGI program and also in PG CGI program after credit transfer and fulfilling other requirements like eligibility criteria and all those things. So that was about a very interesting aspect about this program. Let me come to the program objectives. See, this program has been designed so that the learners they can have a basic as well as advanced understanding of the underlying principles and concepts and techniques related to geoinformation science. And secondly, this program will provide you with skills in geospatial data handling, processing and analysis, and it will also impart critical and spatial thinking to the learners in analytical problems and spatial perspectives. And apart from that, it will also prepare you to apply the principles and techniques towards finding scientific solution to the problems, and it will obviously widen the opportunities for the learners for higher studies, for higher education in developing their career in different sectors of employment that involve geoinformatics. So I would request my colleague and program co-coordinator along with me, Professor Deshmukh, to continue with a further discussion. Thank you, ma'am. So we have planned this session specifically to address several queries that we are receiving from the prospective learners who are continuously inquiring about the features of this program and how they find that what are the aspects of this program which they can learn during that. So that is why we have specifically planned this teleconferencing session. So let us now start with understanding formally what is the geoinformatics, then we can go on to the other aspects of this program. So geoinformatics, as you know, it consists of 2 words, geo and informatics. As you can see this in slide, geo, that refers to the earth, and informatics is related to the computers and the information science, and it refers to the representation, processing and communication of information. So geoinformatics can be considered as a synergy of various disciplines like remote sensing, geographic information system, global navigation satellite system, cartography, geodesy, photogrammetry, etc. So there are 3 basic components that we will discuss here. The remote sensing is a science and art wherein the data about an object or phenomena is collected from a distance, and GIS is about a system that is used for displaying representation analysis of the geospatial data, and GNSS refers to the constellation of satellites from which we get data, and that data is converted in the form of various information like location, navigation. It can be used for navigation, etc. So these are the 3 basic components. Now coming forward, a formal definition of geoinformatics is that it is the science of the gathering, processing and dissemination of information which is spatially defined within the Earth system. Giving you some more background about these technologies.
The geoinformation technologies deal with the acquisition, storage, processing, and dissemination of spatial information. And as geospatial data is a must for planning of infrastructure development, social development, natural calamities, agriculture, power, water, transportation, communication, and also in the fields of insurance and health. So as the initial discussion we mentioned about how the location information is used for various kinds of apps. So this is how this information is also useful for in various sectors, particularly as mentioned in the field of natural resources management, natural disasters, etc. So the geoinformatics is a emerging field, and the advantage of using this technology is that it is relevant wherever there is a spatial data is concerned, and through the means of through remote sensing, that is a means of rapid and periodic data collection, and through this we can create and visualize various scenarios, and that could be helpful for decision makers and planners for planning and management. And of late, demand for geoinformatics professionals is increasing due to its application potential in various fields, like say environmental monitoring and management, also for site selection for various purposes like waste disposal, etc. Then also for terrain mapping and analysis, natural resources management, and also in the field of natural hazards and disaster management, urban and rural planning, and also for traffic, transport. Then there are business applications of this technology, and besides this, geospatial education is another area where there are requirements of geoinformatics professionals who are skilled in this field. And there have been some recent developments which have also tremendously increased the adoption and scope of geoinformatics technology. Particularly, if I can name, there are some government initiatives like scheme of smart cities, Swamitva, Amrit mission, and also there are some other initiatives of the government in the sectors like transport, logistics, and supply chain management. Besides these initiatives, there have been several policy changes recently, like deregulating the geospatial data, opening up the space sector for private sector, and also recently the drone policy has also been liberalized. So all these things are making the increased adoption and scope of geoinformatics technologies. So keeping all this in mind, and also considering the need survey that was carried out and the feedback of the learners, the PGCGI learners, this PGCGI program has been upgraded to a PG diploma and a master's in geoinformatics level. So these programs have been developed with the help of several eminent experts drawn from various national agencies like Indian Space Research Organization, Defense Research and Development Organization, IITs, Center for Development Advanced Computing, and then Department of Science and Technology, and many other private government and private institutions, organizations, and also other industries. So the aim of this MSc Geoinformatics program is to provide the learners with advanced theoretical knowledge and practical skills so that they can leverage the potential of geoinformatics, and it provides an opportunity to learners who are interested to develop skills and are willing to apply those skills in their application domain. Now I'll request Dr. Kakule Gogoi ma'am, who will be talking about the target groups and program details. Yes, sir. So coming to the target groups who can take admission to this MSc Geoinformatics program, you see the target group is regarding the working professionals like who is keen to take or keen to develop interest and
to develop their skills on this geoinformatics program, and also they can earn a higher degree. So the target groups include professionals that are from defense and law enforcement personnel, and also the target group includes the faculty members in higher educational institutes, and also some school teachers who are interested to teach the geoinformatics or related courses, and also working professionals with little or very prior this experience on this geoinformatics program. Also graduates, professionals, and they're who is interested to develop skills in this geoinformatics program. These are the target group for this geoinformatics program. So coming next, if I give some details regarding this program, the duration of this program is like minimum duration is 2 years and the maximum duration is 4 years. So the learners can complete this program with a minimum duration of 2 years and the maximum is 4 years. And the eligibility to take admission to this MSc Geoinformatics program is graduation in science, or graduation in disciplines like engineering, architecture, planning, then computer applications and information technology, or or master's degree in geography from a recognized university. And the program fee is 15,700 per year, and the medium of instruction is English. So the admission process is on. Whoever is interested to take admission to this master's degree program in geoinformatics, they can take admission, and the admission can take from IGNOU website, www.ignou.ac.in. So giving a brief details of the program structure, you see this MSc Geoinformatics program is total credit is of 80 credits, and it has 4 semesters, semester 1, 2, 3, 4, and per semester it has 20 credits. So as you can see in the screen, the first semester course, in each semester you see there are 3 theory courses and 1 practical courses. So the 3 theory courses of the first semester, here as you can see in the screen, the first course is MGY 101, that is Introduction to Geoinformatics, and the second course is MGY 102, that is Remote Sensing and Image Interpretation, and MGY 103, that is Global Navigation Satellite System and Geographic Information System, and the fourth one is MGYL 104, Geoinformatics Laboratory. Here I would like to say that for this practical courses, we have developed this practical course with available data and available tools, and this lab course will be available in soft copy as these tools are updated regularly. So this course will be in soft copy, and this session, this practical session is learners friendly. So there is no need to worry regarding the lab course, which is learners friendly, and the freely available software is being used. So coming to the second semester, the second semester course also, you see this also have 4 courses. As you can see, the first 3 courses is of theory courses, and the fourth one is the lab courses. The first course is MGY 005, that is Techniques in Remote Sensing and Digital Image Processing,
And the second course is MGY 006, that is Spatial Analysis and Modeling. And the third course is MGY 007, that is Applications of Geoinformatics. These three courses are theory courses. And the fourth course is MGYL 008, that is Digital Image Processing and Spatial Analysis Laboratory. So these are the first and second semesters. I will request Professor Meenal Mishra Madam to continue further with the third and fourth semester, Madam, please. So learners, you were acquainted with the first year courses, that is first year of MSc, that is also PG diploma in geoinformatics. Regarding the second year courses, we have again same as first year. In the second year also we have 2 semesters, that is third and fourth, and the credit distribution is 20 plus 20. So regarding the third semester course, we have first course, that is Advances in Remote Sensing and GIS. This pertains to advances in remote sensing, and then you will also come to know about hyperspectral data analysis and microwave data analysis and many more. That is worth 4 credits. Then you have the next course, that is MGY 010, that is Computer Programming for Digital Image Processing. So you will work with Google Earth Engine, and then you will also be acquainted with data reading and visualization and processing and handling raster data. Then the third course, that is geo-environmental, that is about geo-environmental applications of geoinformatics. That is again 4 credit course, and you will read about water and soil applications and geological applications. And then the last laboratory course of this semester, that is a lab course, that is Advanced Geoinformatics Laboratory. It is 6 credits, and as as Dr. Kakuli Gogoi, she told you, all our laboratory exercises, they are built on open source softwares. You will be using open source software, and you will be using open source data. So and our manuals are very much learner friendly. Now let me come to the 4th semester courses. The first course in the first semester is Emerging Application in Geoinformatics, wherein you will read about water resources, agriculture and soil related application, geosciences, biodiversity and many more. Or these are elective courses, and or you can also take Advanced Programming in Geoinformatics, and both the elective courses are 4 credit. You can choose amongst these 2 courses. Then the next one is Research Methodology and Professional Skills in Geoinformatics. That is also 4 credit. And then the next one is Geoinformatics in Natural Resource and Environmental Studies. That is also 4 credits. Now just pay attention. In this last semester, you have a project that is worth 8 credit. So there you have an option. Either you take the project worth 8 credits, or you take up 2 courses of 4 credit each. In these electives, you have Geoinformatics in Urban Development and Planning, and then you have Geoinformatics in Disaster Studies and Geoinformatics in Coastal and Marine Studies. So again I will repeat, either you take up project or you choose 2 electives worth 4 credit each amongst these 3 electives. Now quickly, now next let us come to application part. As my colleagues have already told you about many applications, geoinformatics technology, it has got varied number of
application in nearly all the walks of life. Weather forecast, which you see on televisions, that is using this technology. Then in geology, geoinformatics, in this geomorphology, and then you have in vehicle tracking, all your metros, all these vehicles, they are tracked using geoinformatics technologies. Then you have a lot of application in natural resource management, natural disaster management, forest and biodiversity, and then in pollution studies, urban and rural planning, e-governance, and many more. Even in defense application, forensic studies, so many application, just to name few I told you. Now regarding the employment prospects, you have a big, like a wide range of application prospects, ranging from government organizations to private institutions to R&D institutions in the field of natural resource management, natural hazards and disaster management, environmental monitoring and management, urban and rural planning, and geospatial education, and lot of application in e-governance. Now I will request my colleague Dr. Kakuli Gogoi to discuss further. Yeah, as we are running out of time, I will just quickly say a few words regarding the counseling sessions, as this is an important aspect of this program. You see, students, you have to attend the counseling session. The counseling session is divided into two, like theory counseling and practical counseling, and practical counseling is compulsory, so you have to attend the counseling session to appear in the examination, and the submission of practical record is also a must for appearing in examination, and also you have to submit the assignments to your study center which have been allotted to you, and for appearing for examination you need to fill the exam form, and you can choose your exam center all over India wherever you want to appear in the exam. However, the practical exam will be there only in your study center, and as I told that for practical counseling you have to be regular, and the attendance is one of the important aspect for appearing in practical exam. So today we have discussed about the MSc Geoinformatics program which have been launched recently by School of Sciences IGNOU, and if you have any query regarding this program, you can mail us at pgcgi@ignou.sc.in, or you can contact Director School of Sciences and the program coordinators, the Professor Benita Desmukh and Minal Mishra Madam. Thank you. Thank you. Thank you. We wear clothes on a daily basis, but have we ever wondered, where do our clothes come from? Who makes our clothing? And who are the people and the process responsible for the whole manufacturing of our clothing? If you want to know more about this, Indira Gandhi National Open University from the School of Continuing Education has launched a program which is Certificate in Apparel Merchandising. There are many benefits after doing this program. You can become a designer in various fields. It can be fashion designer, apparel designer, costume designer, or even a textile designer. One can also work as a fashion consultant. Research and development is another field
which one can take up after doing this certificate course. Going into academics is another perk after doing this program. Getting into fashion houses or fashion studios as an intern is also a very good option post doing the certificate in apparel merchandising. The basic eligibility of the program is 10+2. The duration of the program is 6 months to 2 years. The program is also available for both the admission cycles, which is July and January. The exams are conducted twice a year, in June and December. So what are you waiting for? Join this program and get an enriching knowledge in the field of apparel merchandising. And to do so, you can log on to the official website of the university, www.ignou.ac.in. Hello and welcome to the session. In today's session, we will discuss about the analysis of algorithm. What is the importance of analysis of algorithm? Well, if you have designed an algorithm for certain action, then there are many other people who have designed similar kind of algorithms. How will you prove that your algorithm is doing better? That is why we perform analysis of algorithm. The analysis of algorithm, this term was introduced by Donald Knuth. And the purpose was, it predicts the resource requirement of an algorithm. And the objective is to find the complexity of an algorithm in terms of running time and storage space requirement, so as to compare the performance of two or more algorithms performing the same task. System performance is dependent on algorithm's efficiency in terms of both time complexity and the memory. Now, if we look at this particular definitions which we have stated, primarily it is the running time is directly the running time complexity as well as space-time complexity. It directly relates to the efficiency of the program. More likely it is going to be the running time, which is going to be very, very important in today's environment where memory is becoming cheaper and cheaper, although it's still at premium. Memory in the terms of main memory which we are utilizing, right? So for a program you require main memory, and for a program you require processor. From the processing point of view, yes, you will be requiring the efficiency related criteria, and that is the running time, and that is the complexity measurement we in general do. But what are these complexity measurements defined? In what way, in what terms they are defined? Well, let's assume that M is an algorithm and N is its input size. So what we are going to define? We are going to define an algorithm in terms of its input size. The complexity will be in terms of the input size, right? That is N. We will be using N very predominantly in this particular session. The time and space used by algorithm M
are two main measures of the efficiency of algorithm, which we have already stated. In general, the term complexity refers to the running time of an algorithm. In general, if we are simply mentioning the term complexity, then it refers to running time. That's what it means. And how do you measure this running time? Well, the simple method may be count the number of key operations within your algorithm. For example, in the case of sorting and searching algorithms, the number of comparisons is key operations. And two algorithms of sorting will be compared using the same key operations, comparisons. So this is how we basically do analysis. And space requirements are measured by counting the memory requirements of an algorithm, mostly measured as a multiple of data size n. So if space requirement is to be measured, it will be in multiplicity of n. Now think in terms of the time complexity stuff. The time complexity, as we said, if we are comparing, we will be comparing two sorting algorithms, and both should be compared on the comparison, number of comparisons they are performing within the for n size data. Right. Similarly, if we are doing searching, then two searching operations are to be compared once again on comparisons as far as searching is concerned, but they will be compared together. Searching operations will be, algorithms will be compared together, not with the sorting algorithm, and that is how the analysis of algorithm goes. However, in general, we describe certain order times of algorithms as far as complexity is concerned, and that may be defined for each and every algorithm in a different way. We will be talking about it in a little bit from it. But how do we measure, how we define the complexity function? The complexity function, the complexity of algorithm M is the function Fn, which gives the running time or storage space requirement of the algorithm in terms of size. So complexity measurement is always in terms of size. Now there are three cases when we are computing the complexity function. Three cases in general to find the complexity function Fn are: worst case, where the maximum number of steps taken by any instance of size n, right? A particular instance, it can be any of that instance, but maximum number of steps which are being taken. Best case, when minimum number of steps are being taken. And the third one is the average case, the number of steps taken on an average for all instances of size n. So the average case assumes a probability distribution for the input data. For example, all possible permutations of input data sets are equally likely. Now these things are slightly confusing. What is all things are equally likely, or what do we mean by the probability distribution in this particular case? So let us take an example and let us try to understand what complexity mean. An example which we are going to take is going to be very, very simple. Let's take an example of linear search. So let's first define the algorithm for linear search. Now when you are talking about linear search, so what you are basically doing, you are taking an array and you are supposed to find a value, a particular value exists over there or not. So what is the input? An linear list A with n elements and a searching element x. So what you have is a linear list, and x is to be searched into that particular linear list. Okay, the output of this particular algorithm is going to be the index of location of x if it is found in the array, or 0 if it is not present in A. And how the algorithm proceeds? You first start, you set k equals to 1 and location equals to 0. Location is a variable which describes where the element can be found. So that's why we are saying that in the initialization, it has not been found as yet. So location is 0. And we are starting, k is the iterator. So we are starting the value of k as 1. Then we are repeating this operation while location equals 0. And k is less than equals to n. Now please note, this particular condition is very, very important. Location, as soon as you have found that element, location is no longer is going to be 0. You will change it, right? So when you change that location to the location where the element has been found, it is no longer 0, and this
this term will become false. When this particular expression will become false, the whole expression will become false, and you will come out of this particular while loop. Otherwise, it will go on till k is less than equals to n. Now, what you are technically doing, if x equals ak, if you have found x at the kth location of the of array A, you will assign the location variable the value k. So that is the kth location. At the kth index, the value has been found. Once again, this is over, and then you will increment k and continue this particular loop. And finally, what you will say, if location equals 0, that means you have exited the loop now, and if you find the location is still 0, then you will print that x is not present in the array. Otherwise, you will output the location, a location where array x has been found. So that is how the location, as well as you can output both. Now, this over here, you see this particular statement, what we have said. So in this particular array, right? So this is where we can find the elements. So we start with value of k equals to 1 and location 0, and suppose you are looking for 45. So at that location you have 45. So your loop will be exited, and you will be outputting the value of index as 1, not as 0. And not found, in the case of not found, you will be outputting with LOC value, that is location variable value, as 0. So now let's analyze this particular algorithm. The complexity of this search algorithm is given by the number of comparisons between x and array element ak. So the major operation, if you have seen, is basically the comparison operation, right? So what would be the best case? When x is the first element. So the first comparison itself, we have found out the result. Right. So now that is the best case. Best case is just requiring one comparison. See, you have to do one comparison at location 1, right? Then you will be getting your output at this particular place. However, what would be the worst case? It occurs when x is the last element in the element A, or x is not present in the given array. So the comparisons, for example, you are looking forward to 50. So it's not here, it's second comparison, third comparison, fourth comparison, fifth comparison, sixth, seventh, and then the array has ended. So after seventh comparison, you found out that the array is not existing. Suppose you are looking for 12, then after seventh comparison, you will find out that the location is 7. That happens to be the worst case, because you have to make comparison as equal to the size of the array. So that is the worst. So basically, what it basically is telling, that the number of comparisons in the worst case are going to be equal to the size of the array, right? And size of array, or the size n, which we were referring to, the problem size, right? So data size, which happens to be n in this particular case. So that is the simple way of predicting the worst case algorithm. So number of comparisons are determining the behavior of this particular algorithm. What about an average case? How do you find out that the average case for this search algorithm? Well, what we said was that we do some probability distribution for them. So assume that the search element appears in an array A. So we are assuming that it is somewhere in the array, okay, the element which we are searching, and it is equally likely to occur at any position in the array. So it can happen at any of these 7 locations, right? Then the number of compares can be, it can be found in the first location, or second location, or third location, fourth, fifth. And the number of comparisons, suppose it is found in first location, comparisons are just 1. In second location, comparisons are 2. In third location, the 3 comparisons would be needed, like that. And in the nth location, in this particular case n is 7, there will be 7 comparisons needed. So probability of finding x in any of these locations will be 1 by n. What is the probability of finding it here? 1 by 7, 2 by 7, like that, right? So in any of these 7th location, what will be the probability of finding? 1 by n, if we are talking about n. So that is how
we get the average case, but the expected number of comparisons can be computed using expected value. So how many, like what is the average case? Average case is computing the expected value in probability. In probability, we say that is the probability into the probability multiplied by the expected outcome, whatever is the outcome. So 1 comparisons into 1 by n, 2 comparisons into 1 by n, plus 3 comparisons into 1 by n, like that. Right, so here we are reaching into n comparisons, and probability of n comparison is also 1 by n. So we multiply all these values, right, and add that one thing up, and we get an expected value. So you just add that and we get this 1 to n, which the summation of 1 to n series happens to be n into n plus 1 by 2, and there is a 1 by n from outside. So you get n plus 1 by 2 as the average number of comparisons. Now n plus 1 by 2 we normally don't say like that. So the expected number of comparisons in the linear search are about half of the elements in the searched array. So it is basically what we define is n by 2. So this is what we define the best case. What was how many comparisons? Just 1. Right? So it's a constant time algorithm. What about the worst case? In worst case, it is order n, because we have to traverse the entire array. So almost n comparison, not almost, n comparisons would be required if it is a worst case. On an average, you will get n by 2. Almost half of the array you got to search, and after that you will be, at that point of time, you may be able to get it. Average case, what we are telling, it's not that when actually what happens, right? You can find it at third location itself or second location itself, right? But it is the average. So average is done over multiple attempts, right? So n by 2. That's how it turns. Now, this is one of the, this is the average, worst, or best cases. They are normally they are done with the help of algorithms. But in computers or design of algorithms, many a times we use asymptotic notations. So I'll very briefly define the term asymptotic notation over here, and then we will move on to some other, the running time of algorithms in a better way, or you will understand this running time in much better way if you know the asymptotic notations. Now, asymptotic notations are the standard notations which are utilized, and they are normally utilized to when n is trying to reach to a very large value. Most of the time we say when n is reaching infinite, that is the time when we define the asymptotic notation or program behavior, right? So this asymptotic notation briefly are described here. There are 3 basic asymptotic notations, okay, which are used to express the running time of an algorithm when input size n is very large. The first one is called big O, right? This big O, okay, used to express the upper bound, that is the maximum steps required to solve a problem. Most of the time you will find that we represent upper bounds for solving a problem, and this is quite used notation. Second one is omega, which is used to express the lower bound, that is minimum, at least steps required to solve a problem. And the last one, but not the least, theta notation. So you will find most of the time we either use big O or theta. Omega is used, but not quite frequently. And theta is used to express both upper and lower bounds, also called tight bounds. Okay. And finally, asymptotic notation gives the runtime performance for sufficiently large input sizes and is not a measure of runtime for specific input size, which can be done empirically. So if you want to compute the value as we did for some specific n, then we have to do empirically
finding the number of comparison and working with that particular thing. Big O notation and that is theta notation and omega notations are primarily utilized to represent the efficiency of your algorithm when n is very, very large. And that actually is the notation to compare two algorithms about a particular input size. When we say both the algorithms are showing a specific order, then we might go down slightly deeper into specific sizes of algorithm and predict that our algorithm is better or worse than the other similar algorithm of that type. Now, when we talk about efficiency and analysis of algorithms, we talk about certain running times. Right, some common running times which are quite frequently used, and you should know about them and what we are referring to whenever we are talking about the running time of algorithm. The very first of this category is called order n. In fact, the linear search algorithm was of order n only. So it is a linear time algorithm, that is, if the time complexity is at most a constant factor times the size of the input, then it is known as linear time complexity of the size of the input, right? It is represented as Tn is less than equals to Kn, or Tn equals to order of n, where the function is Tn, where n is the size of the input and k is a specific constant. It can be specific constant, and that means you can repeat a particular operation several times, but that will make it 2n, 3n, so k can be any value, any constant in that particular time. An algorithm of this type of complexity generally completes the execution in single pass. So you will be executing the algorithm in one, suppose you are using loop, just like we were using loop, while loop in linear search. So how many passes were there? Just one pass. In one pass, that is one loop, we completed this particular operation, and that is the essence of having one pass in that. For example, to search for another example in this particular case is to search for a minimum value in an array of size n. Suppose we want to do that. So what we are going to say, minimum is, so suppose we assume that a1 is minimum. And then for I is equal to 2 to n, so this is the loop, we will keep checking if ai is less than minimum. If yes, then minimum will be assigned that ai'th value. So you will be keep replacing the value of ai with that particular minimum value. If I can show you example of that, then in this particular array, right? Suppose I want to find the minimum. So how I'm going to go around? First, I'll assume that 45 is minimum. So A1 is minimum. Then we'll compare with A2. So we find that 2 is minimum. So we'll replace minimum by 23. Then we compare. Comparison is still going on, although 23 still remains the minimum. Then we compare minimum, that is 23, with 41, right? Still 23 is minimum. Once again we compare 23 with 20. Now we replace minimum with 20. Now in the next step the 20 remains the minimum, and in final step we replace 12 with the minimum, and you get minimum as 12, because thereafter this is end of the array. So this is the way you can utilize the now this. How many times have you done the pass? Just a single pass of the array, and you were able to predict the requirement. Now another interesting runtime is logarithmic time. It is one of the most used time in many places. It is represented as order log n. If the time complexity of an algorithm is proportional to the logarithm of the input size, then it is known as order log n time. For example, the running time of a binary search algorithm is order log n. And at this point, let me try to describe binary search. And binary search is a very interesting operation. We have done linear search.
Now in linear search, our data was not in the sorted sequence. However, if we divide our, or in fact not divide, we sort our data in a sorted order. Suppose the data is sorted order, and what you do, you start with the middle element. Okay, compare whether the value is equals to the middle value, okay, or less than or greater than. Suppose you have found the value at the middle, your task is done. Otherwise, you find whether the search value is less or more. Now, since the data is sorted, so you know which half you have to go. Okay, so basically you are dividing the search space by half. So you compare with the middle element. If the value is found, perfectly good. Otherwise, the value either will be less, so you go to the lower half, or value would be more, so you go to the upper half. So you have divided the whole search space, okay, from a big, I mean, suppose n to n by 2, from n by 2 to n by 4, n by 4, like that. So you keep reducing the size of the search space. And once you minimize that particular search space, so you would be able to, that is log n. The number of steps required will be, that is going to be log n search order. So you just read about this and you will come to know about it. The second one is order n log n. Is a very common running time for many algorithms which are solved using divide and conquer techniques such as merge sort, quick solve, etc. The common operations among all these problems are splitting of array into equal sized subarray and then solving it its logarithmic time complexity and depicted as recursively. So basically what you will be doing, you will be dividing and then sorting. So like in merge sort, the merging itself takes order n. And dividing the problem, divide and conquer, like the number of steps, they are in the logarithm type, right? So that's how it becomes n log n. So this is a very interesting problem algorithm, that is the order n log n. Then comes the quadratic time. Now quadratic time is another interesting situation which occurs when algorithms has a pair of nested loops where we have outer loop and then inner loop, and the order is basically 2 loops. So each is having order n. So obviously their combined order is going to be order n square. So examples are like bubble sort, insertion sort, selection sort, right? So their worst case time complexities are in the order of that is order n square. Then comes the polynomial time, and polynomial time is where we are basically talking about order n to the power k. And one such example is like given a constant key. This is basically a graph based algorithm which basically tries to divide a graph into independent set of nodes, right? Find independent set of nodes in a graph of size k. So given a constant k and the graph G having n nodes vertices, find an independent set of vertices of size k. So this is what is the problem, and if you do it by brute force, the order comes out to be order n to the power k. And finally you have exponential time, which is beyond the polynomial time complexity, like it is called order 2 to the power n and factorial time n to the n factorial. So these are basically the exponential time. This is exponential, this is factorial time, and the same set of, that is the independent set graph problem, right? If we in the case of when we define k, then that particular problem is exponential, that is k to the power n, polynomial time. But if we want to formulate the problem as given a graph G having a node n vertices, find a maximal independent set of nodes, then this particular problem becomes the exponential time problem. So what we have discussed in this particular session today, we defined the term analysis of algorithm. We described what does it mean, what is the significance of analysis of algorithm. Then we have defined basic ways of measuring the complexity, like best case, worst case, average case, kind of a thing. Then we discussed the that is best case complexity with the help of an example of linear search, and we have discussed about some of the common running time, such as
order n, order log n, log n, right, n square, then n to the power k, that is polynomial time, right, and beyond that, right. So I think the session would be definitely, you can go through the material, and this session will append your learning onto those materials which are given in the block, that is MCS 211 block 1. So with this, I end this particular session. Thank you for being with us. A warm welcome to IGNOU. If you are creative, if you can write well, and if you can visualize, mass communication is the correct career option for you. I am going to talk about postgraduate diploma in journalism and mass communication, which is also the first year of MA program in journalism and mass communication. So any learner who has done a postgraduate diploma in journalism and mass communication is eligible to take admission straight away into the second year of our master's program in journalism and mass communication. Duration to complete this program is minimum 1 year, and because we have this inherent flexibility in distance education system, you can take up to 3 years to complete this program. The minimum eligibility criteria for taking admission in this program is bachelor's in any discipline. To give you a glimpse of what are the various components of this program, we begin with telling you what mass communication is, what are the various areas, various branches of mass communication. Then we go on to tell you about the various reporting techniques and beats of reporting, followed by media ethics, the principles, the codes of conduct that you must follow, and we also focus on the writing skills and editing skills for print media. Now this program comprises of 8 courses of 4 credits each. 25% of the entire program is practical based. So we have 6 theory courses and 2 practical courses. This program is so designed so that it will be able to make you more employable in the market. So it helps you build a career in print media, in radio, television, new media, as well as the allied subjects of mass communication, which could be media marketing, advertising, public relations and corporate communications, event management. This can also help you become an entrepreneur in areas like photography or having your own production house and so on. So I hope that you will be excited to join this program, and we will be waiting to welcome you here in IGNOU. नमस्ते प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका आज के इस सत्र में, जिसमें हम चर्चा करेंगे वैदिक ऋषि तथा देवताओं का स्वरूप। यह मुख्य रूप से एमए के विद्यार्थी जो कि वैदिक अध्ययन इस विषय को पढ़ रहे हैं तथा एमए संस्कृत में जो एक पेपर लगा हुआ है MSK 05, उसके विषय में जब आप वेद से संबंधित सूक्तों का अध्ययन कर रहे हैं, वहां पर एक अपने आप ही प्रश्न उठता है कि जो वेद के मंत्रों के ऊपर ऋषि, देवता इत्यादि लिखे रहते हैं,
उनका मंत्रार्थ से क्या संबंध है। और एक ऋषि जो हम आज सुनते हैं कि जैसे वाल्मीकि महर्षि हुए, ऋषि हुए, विश्वामित्र ऋषि हुए, या भारद्वाज ऋषि रहे जिन्होंने महाभारत में कौरव पांडवों को पढ़ाया, क्या ये ऋषि और जो वेद के मंत्रों के ऊपर लिखे हुए ऋषि हैं उनका कोई संबंध है? देवता जिनको हम आज एक पूजन में पूजते हैं, वह देवता और जो वेद मंत्रों के ऊपर लिखे हुए देवता हैं, इनमें आपस में कोई संबंध या भेद, या ये हमारे वेद को अर्थ को समझने में किस रूप में सहायक हैं, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा आज विस्तार से इस सत्र में की जाएगी। तो जैसे सबसे पहले ये समझिए कि वेद जिसको हम श्रुति कहते हैं, श्रुति अर्थात सुनने मात्र, गुरु मुख से ही जिस ज्ञान का हमें अर्जन हो जाता है, जैसे अब भी हम बहुत सारे ऐसे देखते हैं कि जिनको स्वतः ही ज्ञान प्रकट हो जाता है, कुछ थोड़ा सा गुरु से सीखा, सीखने के बाद अपनी जो साधना है उससे व्यक्ति में ज्ञान के कपाट खुलते हैं। तो वो क्या है कि जैसे ज्ञान प्रकृति में रहता है, मनुष्य उसको देख करके उससे सीखता है, जानता है, वह उसका खुद का धर्म नहीं है, हम किसी ना किसी से अवश्य सीखते हैं। तो जब श्रुति परंपरा गुरु मुख से ही या सीधा कहें प्रकृति से ही या उस ईश्वरीय ज्ञान को जब जो पवित्र आत्मा है वह उसको साक्षात अनुभव कर पाती थी, उसको श्रुति कहा गया। एक गुरु से दूसरे गुरु या शिष्यों तक वह ज्ञान समझने का स्तर तब इतना उच्च था कि उसके उच्चारण मात्र से ही समझा जा सकता था, परंतु धीरे धीरे उन ज्ञान की व्याख्या, विस्तार से व्याख्या करने की आवश्यकता पड़ी। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि वेदों की व्याख्या के जो प्रारंभिक ग्रंथ हैं या उनकी व्याख्या शैली कैसी रही होगी, तो जो मंत्रों का अध्याय विभाजन किया गया है, आपने ऋग्वेद में देखा होगा कि जो पूरे मंत्र हैं उन मंत्रों को मंडल में और छोटे विभाजन किए, उसमें सूक्त बनाए गए, सूक्तों में कुछ और भी विभाजन किए रहते हैं। ऐसे ही यजुर्वेद जो है उसमें पूरे मंत्रों को अध्यायों में बांटा गया। अथर्ववेद में कांड के अंदर सूक्त संख्या बनाई गई। तो ये विभाजन जो है यह भी वेद की व्याख्या को समझने का एक स्तर है, जिसमें विषय के अनुसार, एक देवता के अनुसार ये चैप्टराइजेशन किया गया विषय के अनुसार। तो सबसे पहले उन्हीं मंत्रों को देख करके जब हमें पता चल जाता था कि हाँ यह इस सूक्त में आया है, जैसे कि आपने अग्नि सूक्त सुना होगा ऋग्वेद का, जिसमें 9 मंत्र आते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, उन 9 मंत्रों का कुछ आपस में संबंध है या किसी एक विषय से संबंधित हैं, इसलिए उनको वहां इकट्ठा किया है। तो ये उनके अर्थ पर आधारित था। दूसरे उनकी जो व्याख्या हुई है वह है स्वरों के आधार पर भी। जब उच्चारण से मौखिक हमें ज्ञान समझ में आ जाता है, अगर उसी मौखिक ज्ञान को लिखना पड़े, जैसे बोलते हुए वाक्य में या भाषा में भावों के कारण उतार चढ़ाव आता है, कई बार जिस बात पर ज्यादा जोर देना होता है वक्ता उसको ज्यादा प्रेशर से बोलता है, जिसको एक सामान्य रूप से कहना हो उसको वह एक लो पिच पे भी छोड़ता है। तो स्वयं हम जब वाक्य आपस में बातचीत करते हैं या अब मैं बोल भी रही हूं, तब भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि वाक्य जिस उच्च के साथ शुरू होता है, उदात्त जिसको कहा जाएगा, वाक्य की क्रिया उतने ही एक सामान्य स्वर पर छोड़ दी जाती है। तो उस ज्ञान परंपरा को जब लिखित रूप में सामने आने लगा तो उसमें जो उतार चढ़ाव थे उनको आगे आने वाली पीढ़ी को बताने के लिए ऋषियों ने स्वर चिन्ह का आविष्कार किया, जो मुख्य रूप से 3 हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। आप जब भी कोई वेद उठा करके देखिए, कुछ इस तरह से आपको पंक्ति मंत्रों के नीचे और ऊपर खड़ी रेखा दिखाई देगी, जिसके कारण उसके अर्थ में परिवर्तन आता है। अगर कोई क्रियापद मंत्र के शुरू में है और वह उदात्त है आदि में, तो उसमें उस मंत्र में उस क्रिया की प्रधानता होती है, इसलिए वह क्रियापद उदात्त किया गया है। तो ये भी वेद की व्याख्या करने का एक ऋषियों की ओर से प्रयास था जो स्वरों पर आधारित था। फिर
आगे हम देखें पद पाठ इत्यादि। वेद का जो सीधा सीधा मंत्र अगर ऐसे बोला जाए, अग्निमीड़े पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्विजम होतारम रत्न धातमम, ये सीधी एक पंक्ति ये संहिता पाठ कहलाएगी। संहिता मतलब कलेक्शन, परह सन्निकर्षः संहिता। जब परस्पर एक दूसरे के नजदीक वर्णों को पढ़ा जाता है, उस नजदीकी को, उस समीपता को संहिता कहते हैं। तो जैसे इसी संहिता पाठ में जब पद, हर एक शब्द अगले के तुरंत बाद पढ़ा हुआ है, बिना किसी व्यवधान, बिना किसी गैप के, वह संहिता था। पर अगर हमें उस संहिता में लिखे हुए मंत्र के शब्दों का अर्थ जानना है, तो सबसे पहले हमें अपेक्षा होगी कि हमें इसमें आने वाले हर एक इंडिविजुअल, हर एक पद का अलग अलग पता चल जाए कि इसमें अग्नि अलग है कि मीड़े अलग है, कि अग्निम एक पद है, ईड़े एक अलग पद है। इस तरह से अगली जो वेदों की व्याख्या करने का प्रयास किया है, वह ये पद पाठ कहलाता है। इसी पद पाठ के आगे और भी विकृति पाठ हैं, जैसे कि क्रम पाठ, जटा पाठ, शिखा पाठ। वो सब इसमें कोई मिलावट ना हो वेद मंत्रों में, उनके लिए वो एक टेक्निक बनाई गई है। व्याख्या के संदर्भ में संहिता पाठ और उसके बाद पद पाठ जो है वह हमारी वेद मंत्रों का अर्थ करने में सबसे अधिक सहायक होता है। इसके उपरांत अगर हम देखें वेद की व्याख्या करने की श्रृंखला में आने वाले जो ग्रंथ हैं, जिनको ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, ये सब आप पढ़ भी चुके हैं और पहले जान भी चुके हैं कि वेदों की व्याख्या डिटेल में जो स्वर हैं, पद पाठ हैं या अध्याय विभाजन है, वह एक विस्तार में, लिखित में व्याख्या नहीं है, बल्कि वह उसमें छिपे हुए निहितार्थ को बताने के लिए, हमें एक दिशा देने के लिए वह वेद की व्याख्या की गई थी। दूसरा जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, जो ग्रंथ के रूप में आए हैं, वो सबसे पहले हैं हमारे ब्राह्मण ग्रंथ। उनकी ही और अधिक विस्तार में व्याख्या करने के लिए आने वाले अगले ग्रंथ थे आरण्यक ग्रंथ, और उसके आगे आने वाले ग्रंथ हैं उपनिषद। तो इस प्रकार ये तो ग्रंथ के रूप में आ गए। ग्रंथ से पहले भी उस मंत्र का विषय क्या है और ऋषि और छंद ये भी लिखा रहता है। तो इन तीनों का जो मंत्र के साथ ऋषि, देवता, छंद और स्वर, जो निशान हमने अभी देखे थे, ये लिखे हुए मिलते हैं। जैसे इस मंत्र में आपको दिख रहे हैं, अग्निमीड़े यह मंत्र, इस मंत्र का ऋषि है मधुच्छंदा वैश्वामित्र, देवता है अग्नि, छंद है गायत्री, और देखो अ के नीचे एक पड़ी रेखा है, मी के ऊपर एक खड़ी रेखा है, ये स्वर के निशान है। उदात्त का कोई चिन्ह नहीं है, जो कि नी में ई है वह उदात्त है, इसलिए कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ। अ इसमें अनुदात्त है, इसलिए उसके नीचे रेखा, और मी जो है वह स्वरित है। तो ये चिन्ह इस मंत्र की व्याख्या में सहायक हैं, इनके बिना अर्थ जानना असंभव है। इसी प्रकार जैसा इस पर ऋषि लिखा हुआ है, जैसे देवता लिखा है और जो छंद लिखे हुए हैं, ये भी मंत्र के अर्थ को जानने में अत्यंत आवश्यक हैं। अब रही बात, तो ये ऋषि, देवता और छंद ये क्या है? इनमें से जो आज हम दो पर चर्चा कर रहे हैं वह है ऋषि और देवता। आप ऐसा समझें, जब भी हम किसी शास्त्र को समझते हैं, उस शास्त्र की, या आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट को समझिए, एक अगर बिल्कुल मोटा सा उदाहरण लें, लौकिक उदाहरण, घर में जब हम पहली बार कोई मशीन, फॉर एग्जांपल वॉशिंग मशीन ही लेकर के आते हैं, उसके साथ में बुकलेट दी होती है कि यहाँ पर कौन सा स्टार्ट बटन है, उसका बाद क्या फंक्शन है, कहाँ आपको क्या डालना है। उस मेनू बुकलेट में सारी उसकी इंस्ट्रक्शंस लिखी रहती हैं, कुछ कुछ टर्म्स दी हुई रहती हैं कि ये स्टार्ट है या बीप की आवाज आएगी या ऐसा। इसी प्रकार जब भी हम कोई शास्त्र, नया शास्त्र पढ़ते हैं, उस शास्त्र से संबंधित कुछ पारिभाषिक शब्द होते हैं। जैसे अगर हम संस्कृत व्याकरण पढ़ रहे हों, व्याकरण पढ़ते हुए जहां पर गुण शब्द आ जाए, तो गुण शब्द का अर्थ यह नहीं है कि वह अच्छा, बुरा, सत्य बोल रहा, या ये जो गुण हम किसी व्यक्ति में अच्छे गुण बताते हैं उनकी बात कर रहे हों, बल्कि व्याकरण पढ़ते हुए गुण की बात की जा रही है। तो गुण एक पारिभाषिक शब्द है व्याकरण के परिप्रेक्ष्य में। क्या है? अदेंग गुण है कि अ, ए, ओ, इन तीन को भाषा व्याकरण पढ़ते हुए, पाणिनि की अष्टाध्यायी पढ़ते हुए, गुण इन तीन वर्णों का नाम है।
ठीक इसी प्रकार वेद का अर्थ समझते हुए अगर हमें ऋषि को जानना है और देवता जो ऊपर लिखे रहते हैं तो वो भी एक पारिभाषिक शब्द हैं। इन पारिभाषिक शब्दों के स्वरूप को समझने के लिए हम यह भी जानेंगे कि वेदों को समझने के लिए और इन पारिभाषिक शब्दों को समझने के लिए वेद के 6 सहायक अंग भी बनाए गए हैं, जिनको शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। इनमें से व्याकरण से हम भली भांति परिचित हैं। निरुक्त जो है वह हमें उस भाषा के शब्दों के पीछे के विज्ञान को समझाता है कि अगर हम किसी जलती हुई वस्तु को अग्नि नाम दे रहे हैं, अग्नि यह शब्द दिया, तो क्यों अग्नि यह शब्द दिया। अगर उसमें हम किसी धातु की ऊहा कर रहे हैं तो उसमें वह क्यों सोचा गया। जैसे कि गंगा यह शब्द ही है, गंगा में व्याकरण बताना, व्याकरण में क्या बताएंगे कि इसमें क्या धातु है, रूट क्या है इस वर्ड का, और उसमें सफिक्स प्रत्यय क्या लगा है। परंतु क्यों आपने यही सोचा। इसमें कहते कि गच्छति इति गंगा, गम गम, इसी जो गमन करने वाली है, प्रवाहमान है, उन चीजों को गंगा कहा जाता है। आज हमें जो गंगा बहती हुई दिख रही है, गंगोत्री से निकलकर जो समुद्र तक जाती है, उस प्रवाहमान गतिशील उस नदी को भी हम गंगा कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इस शब्द का जो अर्थ व्युत्पत्ति हमने समझी गच्छति थी, वो घटित हो रही है, इसलिए उसको यह नाम दिया। इसमें अब ये हुई निरुक्ति। निरुक्ति के आधार पर अब हम इसमें ऊहा करते हैं कि गच्छति अर्थात इसमें गम धातु है, तो गम धातु बताना ये व्याकरण का काम हो गया। परंतु इसकी जो निरुक्ति दी, व्युत्पत्ति दी, एटमोलॉजी जो बताई है एक शब्द की, वह हमें निरुक्त सहायता करता है। तो निरुक्त क्या है? जब तक निरुक्त के कॉन्सेप्ट को नहीं समझा है, हम इन 6 वेदांग को पूरा पढ़ने में भी समर्थ नहीं हो पाते हैं। तो वेद को पढ़ने के लिए निरुक्त का ज्ञान आवश्यक है। तो निरुक्त है क्या, छोटा सा इसमें देखेंगे तभी हमें देवता और ऋषि का स्वरूप समझ में आएगा। निरुक्त देखिए, निघंटु की व्याख्या है। निघंटु क्या है? निघंटु कहते हैं वेद के जो कठिन शब्द थे, कुछ ऐसे कठिन शब्दों का चयन किया जिनका अर्थ जानना हमें प्रारंभिक स्तर पर अत्यंत आवश्यक होता है। तो एक तरह से कहें कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट वर्ड, डिक्शनरी, उनको निघंटु एक नाम दिया। जैसे कि हम किसी इंग्लिश की डिक्शनरी को आपटे कोश कहें कि वो वामन शिवराम आपटे ने बनाई है, इसके आधार पर उस डिक्शनरी का एक नाम रखा। ऐसे ही ये वेद के कठिन शब्दों को इकट्ठा जो किया गया उसको निघंटु कहा। निघंटु भी क्यों कहा, इसकी व्याख्या करने वाला जो ग्रंथ है वो निरुक्त कहलाया। उसमें उन्होंने विस्तार से बताई है, आज इस पर नहीं जाएंगे। तो निघंटु में क्या है, इसके छोटे से स्वरूप को देखिए। निघंटु में जो शब्द इकट्ठे किए हैं वो 5 अध्याय में हैं। उन 5 अध्यायों को 3 कांड में बांटा। पहले 1 से 3 अध्याय नैघंटुक कांड कहलाता है। जो चौथा अध्याय है उसको नैगम कांड कहते हैं, और जो 5वां अध्याय है निघंटु का 5वां अध्याय उसको दैवत कांड कहते हैं। इन पूरे 5वां जो अध्याय जिसको अभी कहा था ना दैवत कांड, इस दैवत कांड में देवताओं से संबंधित जो शब्द हैं उनका संग्रह किया गया है। तो पहले के जो 2 अध्याय हैं नैगम कांड और नैघंटुक कांड, उनसे अतिरिक्त जो 5वां अध्याय है जिसको कहा गया था दैवत कांड, उसमें देवतावाचक पदों का, नामों का संग्रह किया गया है। और इसमें कुल मिलाकर के जो शब्द हैं वह 1770 पदों को इसमें पढ़ा गया है। ये सभी के सभी देवतावाचक हैं। अब देवतावाचक क्या है कि जिसमें देवताओं से संबंधित, जैसे इसमें प्रधान रूप से जिनकी वेद मंत्रों में स्तुति की गई है, ऐसे देवता विषयक शब्दों को पढ़ा गया है। कुल 151 शब्दों का संग्रह है। उनके फिर पर्यायवाची भी बताए गए हैं। पहला इसमें अग्नि है, अंतिम इसमें देवपत्न्य है। यह देवतावाचक शब्द पढ़ा गया है। अब इस निघंटु के इन 5 अध्यायों की व्याख्या जिस ग्रंथ में की गई है और जो आज हमें उपलब्ध होता है, सबके लिए सुलभ है, वह आचार्य यास्क का है। इससे पहले और भी बहुत सारे आचार्य हुए हैं जिन्होंने इस विषय पर इन निघंटु की व्याख्या करते हुए अपने ग्रंथ लिखे हैं।
आज जो उपलब्ध है, जैसे दुर्ग ने भी की है, सायण ने भी इस निघंटु पर टीका की, देवराज यजुवा ने भी की है, वो संक्षिप्त है। यास्क की जो निरुक्त है उस निरुक्त को लेकर के ही इन्होंने व्याख्या की है। दुर्ग इत्यादि ने यास्क के निरुक्त पर ही टीका लिखी है। तो यास्क स्वयं अपने ग्रंथ में पहले वाले आचार्यों को कोट करते हैं कि ये ऐसा मेरा मानना नहीं है, इति औपमन्यवः, उपमन्यु आचार्य के जो शिष्य हैं या परंपरा है उन्होंने ऐसा माना है। शाकल्य को कोट करते हैं, शाकपूर्णी आचार्य का, ऐसे लगभग 14 आचार्य वो अपने ग्रंथ में उद्धृत करते हैं। इसका मतलब उनसे पहले भी इस विषय पर अतिरिक्त कार्य किया जा रहा था। तो उन्होंने इस निघंटु की व्याख्या जब की तो अपने निरुक्त में 12 अध्याय बनाते हैं। 12 अध्यायों को वही 3 कांड में उन्होंने विभाजित किया। पहले अध्याय का पूरा और दूसरे अध्याय का जो पहला पाद है वह भूमिका में लिखा। पूरा वह कॉन्सेप्ट उसमें समझाते हैं कि कितनी तरह के शब्द हैं, उनकी कैसे व्याख्या की जाती है। उसके बाद आगे निघंटु जो शब्दकोश था, वेद के कठिन शब्दों का संग्रह था, उन शब्दों की वह एक एक करके व्याख्या करते हुए समझाते हैं। ऐसे करके 12 अध्यायों में इनका वर्णन है। अंतिम 2 अध्याय परिशिष्ट के रूप में, तो कुल 14 अध्याय निरुक्त में मिलते हैं। तो जो अंत के 6 अध्याय हैं, जो निघंटु में 5वां अध्याय था दैवत कांड, उसी की व्याख्या उन्होंने अपने निरुक्त में 7वें अध्याय से लेकर के 12वें अध्याय तक की व्याख्या की, और इसमें देवताओं का वर्णन है। तो अब हम समझेंगे कि उन्होंने निरुक्त में जो देवता का स्वरूप क्या बताया है। देवता कहा, ये एक डेफिनेशन है संस्कृत में ही, यत काम ऋषिर यस्याम देवतायाम अर्थ पत्यम इच्छन स्तुतिम प्रयुक्ते तद दैवतः समंत्रो भवति। कि ऋषि जिस कामना से मंत्र में अर्थ की ऊहा करना चाहता है, जिस मंत्र में उस अर्थ को बताया गया है, वह उस मंत्र का विषय होता है। अर्थात एक सरल शब्द में कहें, उस मंत्र का प्रतिपाद्य विषय। अग्निमीडे पुरोहितम, इसमें इतने सारे शब्द हैं, पर ये सारे शब्द किस विषय को बता रहे हैं, ये अगर हमें पता चल जाए तो अर्थ करने वाला व्यक्ति उसी दिशा में इन शब्दों के अर्थों को सोचेगा। तो इसमें उन्होंने बताया अग्नि यह इस मंत्र का देवता है। तो अब क्या समझेंगे हम कि अग्नि इस मंत्र का विषय है। ये हो गया विषय। अब ऐसे करके पूरे जो वेद हैं उनमें बहुत सारे विषय बताए गए हैं, जहां पर कि कितने तरह के, पहले उन्होंने मंत्र भी बताए हैं कि वेदों में जो मंत्र मिलते हैं 10,000 के लगभग, वे मंत्र 3 तरह के होते हैं। तास्त्रिविधः ऋचः, क्या? प्रत्यक्षकृत, परोक्षकृत और आध्यात्मिक। ऐसे करके 3 प्रकार के मंत्र होते हैं। प्रत्यक्षकृत और परोक्ष और आध्यात्मिक कैसे? जैसे जब हम बात करते हैं, एक वक्ता है बोलने वाला, सामने जिससे बात की जा रही है, और एक अन्य पुरुष जिसके विषय में, कोई भी पुरुष का मतलब कोई जीवित ही नहीं, जिस भी विषय में हम बात करते हैं उसको संस्कृत भाषा में प्रथम पुरुष, वक्ता जो है उसको उत्तम पुरुष, और जो सामने सुनने वाला है उसको मध्यम पुरुष कहा जाता है। तो अगर हम पूरे वेद के मंत्रों को देखें, उसमें से कुछ वेद के मंत्र ऐसे लगते हैं जब वो किसी थर्ड व्यक्ति को बात करके, कि इंद्र अग्निमीडे पुरोहितम, जैसे ये कहा, इसमें अग्नि की बात की जा रही है, तो हम किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। परंतु क्रिया से देखेंगे, क्रिया जहां पर किसी थर्ड पर्सन के बारे में है वो कहलाती परोक्ष। प्रत्यक्ष क्या होंगी? जिसमें जैसे तुम हिनः पिता बसो, ऐसे करके अगर हमने कहा कि हम जैसे सामने ही कोई व्यक्ति या ईश्वर या जिसको भी हम संबोधित कर रहे हैं वह हमारे सामने है, ऐसा मान करके कर रहे हैं, ऐसे मंत्रों को कहा जाता है कि वह प्रत्यक्षकृत ऋचाएं हैं, मंत्र हैं। और जिन मंत्रों में उत्तम पुरुष का प्रयोग हो, क्रिया उत्तम पुरुष की हो, या अहम, आवाम, वयम, ये तीनों भी उत्तम पुरुष कहलाते हैं, इनका अगर प्रयोग किया गया है तो वो आध्यात्मिक ऋचाएं कहलाती हैं। ये है ऋचाएं। इन मंत्रों में कितने विषय बताए जा सकते हैं? तो जो निरुक्तकार हैं उन्होंने इसका विभाजन किया। उन्होंने कहा कि जो वेद के विषय हैं, जो देवता बनेंगे, वे विषय लगभग 8 गिनवाए हैं। सबसे पहले स्तुति, कि मंत्रों के माध्यम से कहीं ना कहीं स्तुति की जा रही है।
स्तुति का अभिप्राय क्या होता है? गुणवाचन, किसी के गुणों को बताना, उसकी झूठी प्रशंसा नहीं, बल्कि उसमें जो गुण है उनको बताना। गुण बताने का अभिप्राय क्या है? कि उस पदार्थ के हमें गुणों का ज्ञान हो, जिसके आधार पर व्यक्ति उसका वैसा ही प्रयोग अपने जीवन में कर सके। तो कुछ ऐसे मंत्र मिलेंगे जो स्तुति परक हैं, जैसे इंद्रस्य नु वीर्याणि न प्रवोचम। तो यहाँ पर इंद्र की स्तुति की गई है। इंद्र यह एक प्रकृति का पदार्थ, इसके विषय में वह स्तुति अर्थात उसके गुण और कर्म बता रहे हैं। कुछ मंत्र प्रार्थना विषयक होते हैं, जैसे जीवेम शरदः शतम, शृणुयाम शरदः शतम, प्रब्रूयाम शरदः शतम। ये मंत्र में हम प्रार्थना करते हैं कि, या कहें सर्वे भवन्तु सुखिनः, यह मंत्र नहीं, कोई श्लोक है कि सब सुखी हो। तो इस तरह से कुछ मंत्र जो हैं, बहुत सारे मंत्र, वो क्या होते हैं? प्रार्थना विषयक होते हैं। स्तुति, प्रार्थना। कुछ होंगे शपथ, अभिशाप। शपथ क्या है? कि आप ये सोचते हैं कि मैं अगर अपने सत्य की अवधारणा, सत्य स्थापित, जैसे अद्रया मूर्य यदि यातु धानो अस्मि, यदि यातु धानो अस्मि, अगर मैं कष्ट देने वाला हूं तो मेरे साथ ऐसा ऐसा हो, ये शपथ। अभिशाप अगर इसी मंत्र में ही आता है, यह ऋग्वेद के दशम मंडल का मंत्र है, इसी में ही जो ऋषि है वह कहता है कि अगर इतनी मैं अपने को सत्य स्थापित कर रहा हूं, फिर भी कोई मेरे ऊपर अगर डाउट करता है तो उसको शाप के रूप में ही कहा जाता है कि वीरई दशभीर वियूयाः, वियूयाः कि वह वियुक्त हो, जो मुझ पर संदेह करे इतने अधिक प्रमाण देने के बाद भी, तो ये अभिशाप में आता है। भाव विवक्षा, भाव का अर्थ यह नहीं है कि आपके अंदर अच्छे भाव हैं कि बुरे भाव। भाव अर्थात जहां पर हम सृष्टि उत्पत्ति की बात कर रहे हों, तो वेद के मंत्रों में सृष्टि उत्पत्ति विषयक भी मंत्र मिलते हैं, विलाप से संबंधित मंत्र भी मिलते हैं, निंदा से संबंधित मंत्र भी मिलते हैं, और प्रशंसा कि जहां पर अच्छे, जिसे कि कहा कृषिम कृषस्व, कि तुम मेहनत कीजिए। वो पूरा अक्ष सूक्त है एक, जिसको कहते हैं कि जुआ सूक्त। जुआ मतलब कि व्यक्ति को धन अर्जन और विद्या अर्जन में कोई शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए। ये शॉर्टकट ही जुआ कहलाता आजकल जिसको कहें हम, तो ये नहीं करने चाहिए, बल्कि मेहनत करे। तो इस तरह से, जैसे ये भी कहा केवलागो भवति केवल आदि, कि अकेला खाने वाला पाप का भागी होता है, मिल बांट के खाना चाहिए। तो ये सब विषय देवता कहलाते हैं। आगे हम एक छोटे से ब्रेक के बाद ऋषि के विषय में चर्चा करेंगे, तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। Are you interested in television journalism or radio journalism or online journalism? Or do you want to learn with the flexibility of open learning? Or if you are a working professional, wants to enhance your knowledge and skill with certification in the field of electronic media, then School of Journalism and New Media Study, IGNOU, offers PG Diploma in Electronic Media for you. This program includes audio and audio-visual program production for radio, television and online platforms. Here are some important details about the program. We have total 8 courses of 32 credits, 6 theory courses, 1 practical and 1 project. Eligibility: bachelor's degree in any subject. Minimum duration 1 year, maximum 3 years. Medium is English, but students can write their examinations, assignments, practical and project in Hindi also. So if you are interested in television, radio or online media, please come and join IGNOU's PG Diploma in Electronic Media.
हाँ जी, स्वागत है आपका एक बार फिर से। उसी चर्चा में हम आज चर्चा कर रहे हैं वैदिक देवता और ऋषियों का स्वरूप। तो देवता हमने जाना कि मंत्र का जो प्रतिपाद्य विषय है, जिस मंत्र में जिस विषय को समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है, वह उस मंत्र का देवता कहलाता है। यह एक पारिभाषिक शब्द है और इसी पारिभाषिक शब्द की विस्तार से व्याख्या निघंटु के ही जो व्याख्या ग्रंथ है निरुक्त, उसके 7वें अध्याय में की गई है। इस 7वें अध्याय में जहां पर उन्होंने यास्क ने हमें देवता की परिभाषा दी कि यत काम ऋषिर यस्याम देवतायाम अर्थ पत्यम इच्छन स्तुतिम प्रयुक्ते तद दैवतः समंत्रो भवति। उसके बाद यह मंत्रों में वर्णित होने वाले विषय बताए गए कि लगभग 8 के बाद सबको काउंट कराना एक बड़ा ही विस्तृत कार्य है। इसलिए यास्क ने कहा कि एवं उच्चावचै ही ऋषिणा मंत्र दृष्टयो भवन्ति, कि इस तरह से अनेक अभिप्राय वाले, उच्चावच अर्थात अनेक अभिप्राय वाली मंत्र दृष्टियां, कि जिसमें ऋषियों ने मंत्रों को देखा है, जिसकी चर्चा हम करेंगे। ऐसे अनेक विषय वेदों में वर्णित किए गए हैं, इसलिए अनेक देवता हैं। अभी तक आपको यही जानना है वेद मंत्र का अर्थ करते हुए। जहां हमें ये पता करना है कि इस मंत्र का देवता क्या है, वहां आप समझेंगे कि इस मंत्र का प्रतिपाद्य विषय क्या है, यह हमें बताना चाहा है। अब इन देवताओं को भी आगे और अधिक विस्तार से चर्चा करते हुए कहा निरुक्त में कि ये जो मंत्र हैं, अगर इनको हम बांटें तो 3 विभाग में बंटते हैं। कुछ देवता हैं जो विषय है मंत्रों में जो बताए गए हैं, वे हैं पृथ्वी स्थानीय, कुछ हैं अंतरिक्ष स्थान और कुछ हैं द्यू स्थान। पृथ्वी स्थान, पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, उसमें मुख्य जो देवता है वह अग्नि। अंतरिक्ष जो कि ऊपर ब्रह्मांड और पृथ्वी के बीच का जो एक स्पेस जिसको हम बोलते हैं पृथ्वी वायुमंडल में, जिसका मुख्य देवता है वायु और इंद्र। और द्यू स्थान, द्यू मतलब प्रकाशित होने वाले, जहां नक्षत्र, सूर्य इत्यादि ये जो प्रकाश वाली हमें नक्षत्र तारे दिखाई देते हैं, वह द्यूलोक कहा जाता है, द्यू स्थान। वहां का देवता है सूर्य। तो कुछ मंत्र हैं उस द्यू स्थान विषयक वस्तुओं के बारे में, कुछ हैं अंतरिक्ष स्थानीय और कुछ मंत्र हैं पृथ्वी स्थानीय। उनमें से अग्नि के साथ साथ और भी बहुत सारे साहचर्य देवता हैं। इसलिए निरुक्त में आता है कि महाभाग्यात देवतायाः एक आत्मा बहुधा स्तूयते, कि देवता एक है, विषय एक है और उसकी बहुत अधिक शाखाएं होने के कारण अलग अलग उसकी स्तुति की जाती है। स्तुति का मतलब वही पुनः ये नहीं है कि हम किसी की पूजा इस तरह से कर रहे। स्तुति मतलब उस पदार्थ के गुणों को जानना, उसकी प्रॉपर्टीज जानना, यह स्तुति कहलाती है। तो जब अग्नि से संबंधित जो उसके और साहचर्य देवता हैं, उस समय जो देवता और भी हैं पृथ्वी स्थानीय। अब देवता का मतलब विषय, और भी बहुत सारे विषय हैं जो मनुष्य को जानने चाहिए, जैसे दान है, दार्शनिक सूक्त है और महिमा भैषज्य सूक्त है, औषधियों का वर्णन जहां मिलता है, ये सब पृथ्वी स्थानीय देवता हैं। इनके देवता भी वैसे ही होंगे। तो ये सब पृथ्वी स्थानीय और अग्नि उनमें प्रमुख है। ऐसे ही द्यू स्थानीय, वायु, इंद्र और उसके साथ ही जैसे विद्युत है, ये सब हमें जो मोटे मोटे रूप से अंतरिक्ष में दिखाई भी देते हैं, अनुभव कर पाते हैं, वह मुख्य है। उसके अतिरिक्त जो उसके साहचर्य देवता हैं, उन सब का वर्णन भी या उन सब का संग्रह भी निघंटु के दैवत कांड में किया गया है। ऐसे ही जब ये देवता शब्द लोक व्यवहार में या कहीं जब मंत्र में लिखा हुआ आता है, जैसे अग्निमीड़े पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्विजम, देवम मृत्विजम, इस मंत्र में हमें देव शब्द सुनाई देता है। या हम कहते हैं मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। तो देव क्या है या देवता, जो मंत्र की व्याख्या करते हुए, एक है मंत्र के ऊपर लिखे हुए देवता, बाहर मंत्र से बाहर, वहां देवता का अर्थ क्या था, विषय। और जब मंत्र में आएगा उसका अर्थ है देवो दानात्वा, दीपनात्वा, द्योतनाद्वा, द्युस्थानो भवति इति वा।
ये निरुक्त ने ही एक व्याख्या दी कि जो चीजें दान हमें देती हैं वो देव कहलाती हैं। दीपनाथ, जो वस्तुएं हमें प्रकाशित करती हैं वो भी देव कहलाती हैं। जो स्वयं प्रकाश वाली हैं वे भी कहलाती हैं, और जो द्यू स्थान में रहते हैं वो भी देव कहलाते हैं। तो ये देव, ये कॉन्सेप्ट है। जब हम लौकिक उसकी बात कर रहे हैं, उस समय वेद के मंत्र पढ़ते हुए जहां कहीं देव शब्द आया है, वहां पर अभिप्राय होगा कि इस मंत्र में कोई ऐसी का वर्णन किया जा रहा है जो स्वयं प्रकाश वाली है या हमें भी प्रकाश दे रही है, जैसे सूर्य इत्यादि या अन्य नक्षत्र, और द्यू स्थान में रहने वाले और जितने भी हमें ब्रह्मांड में दिखाई देने वाले ग्रह उपग्रह इत्यादि हैं, उनके विषय में भी अगर वेद में बताया गया है तो वो भी देव कहलाते हैं, क्योंकि वो हमें दे रहे हैं। इसी व्याख्या के अनुसार प्रकृति का जब हर एक पदार्थ हमें कुछ ना कुछ देता है तो वो भी हमें, हमारे लिए क्या कहलाएंगे? देव। इसलिए उनकी एक ज्ञान है आपको सूक्ष्म विषय जानने के लिए, जिसमें हर किसी की रुचि नहीं होती है। हर कोई ये नहीं जानना चाहेगा कि गाड़ी कैसे चलती, उसको गाड़ी चलाने से मतलब है, पर वह कैसे फंक्शन कर रही है, क्या उसके पीछे साइंस और वो सब लगा हुआ है, ये सब साइंटिस्ट सोचते हैं बनाने के लिए। जो बड़ा जनमानस है वो उसके आधार पर उनका प्रयोग करता है। तो ऐसे ही जब ऋषियों ने देखा कि वेदों में इतने इतने विषयों को बताया, उनको देवता कहा, इन देवताओं का मनुष्य के सामान्य जीवन पर, हर मनुष्य के जीवन पर इनका प्रभाव पड़ता है, व्यक्ति को इनके मूल्य का पता होना चाहिए, अपने जीवन में इन प्रकृति के तत्वों की उपयोगिता पता होनी चाहिए। इसलिए देव के रूप में उनकी एक पूजन व्यवस्था बनाई गई कि देव की पूजा करनी चाहिए। माता पिता छोटे बच्चे से लेकर के उसके जब तक वह अपने पैरों पर नहीं खड़ा होता उसके बाद भी उसके लिए देते ही रहते हैं, इसलिए वो देव हैं। अतिथि देव हैं, ये जीवित देव कहलाए। ऐसे ही जो प्रकृति के पदार्थ हैं, हमारे वृक्ष हैं, हमारा पूरा पर्यावरण है, इसमें आने वाली हर एक औषधि तत्व, हर एक वायु जिससे हम श्वास लेते हैं, प्राण जिससे जीवित रहते हैं, इन सबको देव के रूप में परिभाषित करके, क्यों? इसकी वही एटिमोलॉजी जो थी से शब्द की कि देव दानात्वा दीपनात्वा, तो ये देव का एक लौकिक जन सामान्य अर्थ है। और जब मंत्र के अर्थ में हम बात करेंगे, जैसा कहा था, किसी शास्त्र को समझने के लिए हमें उसके पारिभाषिक शब्दों का ज्ञान होना चाहिए। तो देवता एक पारिभाषिक शब्द भी है, और देवता एक हमारे लिए प्रतिदिन के प्रयोग में जहां जो आज प्रेजेंट में हम जिससे देवता अर्थ समझते हैं उसका भी एक अर्थ है। इनका आपस में एक संबंध कि वो क्या है, मंत्र में किन विषयों का वर्णन है, प्रकृति के ही सभी पदार्थों को बताया गया है। उसमें आप देखना कभी अग्नि, रुद्र, इंद्र, सविता, यही अंतरिक्ष, वाणी, यही सब जो विषय हैं बताए हैं, यही सब विषय उन मंत्रों के देवता हैं। और ये विषय या देवता हर मनुष्य के लिए, हर प्राणी मात्र के लिए उपयोगी हैं, इस वायुमंडल में रहने या इस पृथ्वी की एक अच्छी आयु और एक पूरे विश्व के अच्छे कल्याण के लिए। इसलिए इनको देवता कहा गया और उनको जानना चाहिए। तो ये देवता हैं। इन देवताओं की आगे अनेक प्रकार, जैसे कहा था ना, महाभाग्यात एक देवताया आत्मा बहुधा स्तूयते, कि एक ही देवता उसकी बहुधा स्तुति की जाती है। उसके अनेक अलग अलग जो शक्तियां हैं उनकी अलग अलग स्तुति करते हैं। हमें कौन सी शक्ति क्या पसंद, उसकी पूजा अर्चना या उसका हम अपने जीवन में उपयोग करें। तो इस प्रकार अगर गिनने लगे वेदों में वर्णित विषयों को, तो वो कहा जाता है कि 33 कोटि, कोटि मतलब प्रकार, करोड़ भी कहते हैं उसको उसकी व्याख्या में। तो इस तरह से कहा गया कि 33 करोड़ देवी देवता। तो मतलब क्या, इतने विषय वेद मंत्रों में बताए गए, उनका उपयोग जन मानस को अपने व्यवहार में एक वैज्ञानिक तरीके से किस रूप में करना चाहिए, जो पूजा अर्चना इत्यादि के माध्यम से एक व्यवहार में आया, वो विषय अलग है। वेद की व्याख्या में देवता क्या है, मंत्र का विषय। अब हम समझते हैं ऋषि। हर एक मंत्र पर ऋषि लिखा रहता है। ऋषि के विषय में आपने कहा होगा मंत्र दृष्टारो ऋषयः है, कि मंत्रों को देखने वाले ऋषि हैं। एक कहते हैं साक्षात्कृत धर्माणो ऋषयो बभूवः। तो इस तरह से इन मंत्रों जो ये हैं ऋषि दर्शनात्, तो एक विचारधारा क्या है कि ऋषि क्या है, मंत्र करता है। उन्होंने मंत्र बनाए बैठ के। अगर मैं ऋषि मान लो
तो मैंने मंत्र बनाया। उनका मंत्रार्थ के ज्ञान से कोई संबंध नहीं है। जैसे जिस व्यक्ति ने मोबाइल बनाया, उस व्यक्ति को जानने से हमें क्या कि उसका क्या था, हमें केवल मोबाइल के फंक्शन का पता होना चाहिए। तो एक मत यह है कि मंत्र बनाने वाले थे, उनका मंत्रों को जानने में कोई अर्थ को जानने में वो आवश्यक नहीं है। एक विचारधारा क्या है कि मंत्र दृष्टा, कि मंत्र अर्थात उस ज्ञान है, प्रकृति में ज्ञान है, उसको हम सीखते हैं, अर्जित करते हैं किसी ना किसी माध्यम से। तो जिसने उसको साक्षात्कार किया, जिसने उसको रियलाइज किया, जिसने उसको जाना उस विषय को और उसको एक सबके लिए प्रकट किया, साक्षात्कार करने वाला, वह क्या कहलाए? ऋषि। आज की भाषा में आप समझें तो कहा जा सकता है कि जैसे साइंटिस्ट जिनको कहते हैं, चंद्रयान पर अभी जैसे कि प्रज्ञान नामक भेजा गया है, उसके अंदर जो पूरा पीछे लगाया गया है कि कैसे यह कार्य करेगा, यह सब सोचा समझा करा, रियलाइज किया और उसको प्रैक्टिकल किया, वो पूरी टीम, वे सब साइंटिस्ट कहलाए। इसी प्रकार ऐसे ही ये केवल संस्कृत निष्ठ शब्द है। तो उनके अनुसार क्या है कि ऋषि क्या है? मंत्र दृष्टा। दृष्टा का मतलब ऐसे नहीं आंखों से देखना, देखना केवल आंखों के लिए रूढ़ हो ऐसा नहीं है। हम कई बार कहते हैं सब्जी बनी है, सब्जी चख कर देखना नमक है कि नहीं, सुनकर देखना कैसी आवाज आ रही। तो देखने का मतलब क्या है? जानना। तो जिन्होंने उस विषय को, उस ज्ञान को रियलाइज किया, अनुभूत किया, साक्षात्कार उसको अनुभूति पर लेकर के आए, वो भी ऋषि कहलाए। और उन्होंने, वे कोई प्राणीधारी ही, शरीरधारी ही व्यक्ति हैं, जीव रहे हैं, उनके नाम पर हर एक मंत्र पर ऋषि ऐसा लिखा रहता है। जैसे कि मान लीजिए विश्वामित्र है तो वो कहेंगे विश्वामित्र नामक इन व्यक्ति ने इस मंत्र का साक्षात्कार किया, अनुभव किया, इसलिए इस मंत्र का ऋषि विश्वामित्र है। तो ये दूसरा मत। उनके अनुसार वेद क्या है? अपौरुषेय। पौरुषेय, अपौरुषेय, ये हम एक विस्तार अलग से चर्चा है इसकी, हम कर भी चुके होंगे कि जो कहते हैं कि जो वेद हैं वो किसी पुरुष व्यक्ति ने नहीं बनाए हैं, वह स्वतः ही प्रकट हुए हैं। वेद का मतलब वो टेक्स्ट बुक नहीं, चार वेद का मतलब ज्ञान। तो ज्ञान जो है वह किसी पुरुष व्यक्ति का है नहीं, वह इस प्रकृति के हर एक पदार्थ का, जिसको हम जान करके, सीख करके, अनुभूति के स्तर पर लेकर के आते हैं, तब वह क्या कहलाती हैं? श्रुति या मंत्र या ऋचा। तो ऐसे हर एक मंत्र के उनके अनुसार व्यक्ति रहे, उन व्यक्ति ने उस मंत्र का साक्षात्कार किया, बनाए नहीं है। पहला मत था बनाने, लिखने वाले, जैसे आज कोई पोइट्री लिखे, पोइम लिखे, वो मत है जो वेस्टर्न विद्वान रहे हैं, पाश्चात्य विद्वान जो रहे, उनके अनुसार क्या था कि ये वेद के मंत्र किन्हीं व्यक्तियों ने बैठ करके, जैसे आज हम पोइम वगैरह लिखते हैं, ऐसे लिखी हैं और ये वेद है। वो मत है पाश्चात्य विद्वानों का। भारतीय में दो हैं, एक कहेंगे मंत्रों का साक्षात्कार करने वाले, अनुभव करने वाले, और वो उस व्यक्ति के ही नाम। एक मत है, अगर हम समझें, जैसे देवता एक पारिभाषिक शब्द था, इसी प्रकार ऋषि भी एक पारिभाषिक शब्द है। ऋषि का अर्थ होगा किसी विषय को देखने का एक दृष्टिकोण। जैसे मान लीजिए, अगर हम वही एग्जाम्पल अगर लें, न्यूटन ने जैसे सेब को गिरते हुए गुरुत्वाकर्षण को सोचा या लॉ दिया, किसी भूखे व्यक्ति को सेब दिखेगा, उसका दृष्टिकोण, विषय क्या है? सेब हो गया है, तो वो उसका देवता हुआ, जो उसको अनुभव होगा। अब देखने वाले का दृष्टिकोण क्या है? भूखा है तो उसको खाने की दृष्टि से देखेगा, तो वो उस सेब की व्याख्या उसी प्रकार से करेगा। एक साइंटिस्ट ने जब वह उसको गिरते हुए देखा, एक थिंकर ने, तब वह उसमें से प्रकृति के कुछ अलग नियम निकाल पाया। तो उसकी दृष्टिकोण जो उसके पीछे निहित है, वह उस विषय को समझने में सहायक होता है। अब अगर हमारे सामने ऐसे ही बिल्कुल छोटे बच्चे हैं, टीवी को देख करके सोचेंगे कि कार्टून चले, टीवी एक विषय हो गया, वह उसकी अब व्याख्या करेंगे, उसको टीवी को समझना है, फिर उसके बारे में अगर एक लाइन देनी है जो मंत्र कहलाएगा, वह लाइन, वह मंत्र, उसको समझना, उस विषय को, वो उसके पीछे छिपी हुई एक दृष्टिकोण पर ही निर्भर करती है, तो वह ऋषि है। ऋषि इस शब्द का अगर हम व्याकरण से अर्थ देखें कि रि गतौ धातु से बना है, या
ऋष गतौ धातु भी है, जिससे कि कित प्रत्यय और कितवत हो जाता है, ई प्रत्यय होकर के, तो ऋषि शब्द बना, जिसका अर्थ गति। गति का भी अर्थ केवल जाना नहीं है, 3 अर्थ हैं, ज्ञान, गमन और प्राप्ति। जो हमें ज्ञान भी कराते हैं, गमन भी इसका अर्थ है, और प्राप्ति भी कराएं, तो उसको भी ये सब गम धातु से प्रकट होते हैं या गति से। तो ऋषि का अर्थ क्या हो गया? जो इसी तरह से ज्ञान कराते हैं, हमें बोध कराते हैं, अज्ञान से हमारी मुक्ति करा करके ज्ञान की तरफ गति कराते हैं, वह ऋषि। और उसी के कारण उस मंत्र को समझने का जो दृष्टिकोण है, वह दृष्टिकोण भी इस ऋषि शब्द से अंगित होता है। अब मान लीजिए, अभी हमने जो अग्नि सूक्त का मंत्र देखा, अग्नि उस मंत्र का विषय था, अर्थात उस मंत्र में अग्नि के विषय में बताया गया है, और उस मंत्र के ऊपर ऋषि लिखा हुआ विश्वामित्र। तो विश्वामित्र, अब व्यक्ति को छोड़िए, ये किसी का नाम भी हो सकता है, बहुत सारे नाम, हम राम पुरुष भी हुए, आज भी हम नाम रख लेते हैं, तो वो नाम होना स्वाभाविक है, परंतु वहां पर उसके पीछे यौगिक अर्थ भी है। तो विश्वामित्र, विश्व सबके मित्र जो हैं, वह विश्वामित्र कहलाता है। तो निरुक्त में हर एक ऋषिवाचक शब्दों की व्युत्पत्ति करने की हमें एक प्रक्रिया समझाई गई है। जैसे अग्नि एक शब्द है, इस अग्नि को क्या अर्थ है? कहेंगे अग्रणी भवति, अक्नोपनो भवति, अंगम नयति सन्नम मानः, ये उसकी व्युत्पत्ति दी गई है। वो हमें समझा रहे हैं कि कौन कौन चीजें अग्नि हो सकती हैं। तो जिसमें जैसे क्वालिटी बताई अग्रणी, जो चीज आपको आगे लेके जाने वाली होती है, वह अग्नि कहलाती है। अब ये जो व्याख्या है, आप जिस भी पदार्थ में देखें, अगर हमें हमारे माता पिता जीवन में आगे लेकर जाने वाले हैं, वे अग्नि हैं। अगर गुरु हमें ज्ञान दे करके, हमारे अज्ञान का निवारण करके हमें आगे लेके जा रहा, तो गुरु भी अग्नि कहलाता है। ऐसे ही जो जलता हुआ पदार्थ हम रसोई घर या आप माचिस की तिल्ली में देखें, उसकी लो भी ऊपर की ओर जाती है, इस कारण उसको भी अग्नि कहा गया। तो अग्नि इस शब्द का अर्थ केवल मात्र वह नहीं है, फायर अगर हम इंग्लिश में, केवल वह नहीं, इसके बहुत सारे अर्थ हैं। तो ऐसे ही ऋषि वाचक जो शब्द हैं, वे जो शब्द मंत्र के ऊपर जो लिखे हुए हैं, वो शब्द भी ऐसे ही व्युत्पत्ति अगर करके देखें, तो वो उस मंत्र में छिपे हुए एक दृष्टिकोण की ओर हमारा संकेत अंकित करते हैं। इसलिए कई बार एक मंत्र बार बार हमें लगता है कि वेद में, यजुर्वेद में भी है, ऋग्वेद में भी है, सेम है, परंतु देखना उनके स्वरों में, उनके ऋषि में या देवता में अंतर होगा। इन तीनों में अंतर आने से ही मंत्र के अर्थ में अंतर आएगा। अगर मान लीजिए विश्वामित्र यह ना हो करके कोई और इसका ऋषि होगा और देवता भले ही अग्नि हो, तब उसका उसी ऋषि के अनुसार उसी दृष्टिकोण से मंत्रार्थ किया जाता है। तो ये हैं ऋषि और देवता। तो दोनों ही वेद के अर्थ को समझने में हमारे क्या बने हैं? मंत्रार्थ को समझने में सहायक, और जिसकी विस्तार से व्याख्या निरुक्त में आती है। इसी में ही चलते हुए जैसे छंद की बात अगर करें, हर एक मंत्र के ऊपर छंद लिखा रहता है। छंद आप लौकिक उससे भी देख सकते हैं, जैसे कि हमारे हिंदी में भी बहुत सारी कविताएं करते हैं, वो किसी छंद में होती हैं, जिसमें तुकबंदी होती है, एक लय होती है, एक उसमें शब्दों की सीमा निश्चित होती है। एक हम बात करते हुए गद्यात्मक भाषा का प्रयोग करते हैं। गद्यात्मक भाषा कि जिसमें कोई शब्द सीमा नहीं है, आप कहीं पर भी पूर्ण विराम लें, कितनी ही लंबी लाइन बोल सकते हैं, उसमें कोई रिदम नहीं होती, लय नहीं है। तो दूसरी जो पद्यात्मक हैं, जो छंद में है, जहां पर अर्थ के कारण पाद व्यवस्था चरण जो बनाए गए हैं, तो छंद का अर्थ क्या होगा? ये भी एक पारिभाषिक शब्द है, जो कि चदी आह्लादे धातु से बना है या छदी आवरणे धातु से बना हो, कि जो आवरण जिसने किया हुआ है उस मंत्र को पूरे में जो आच्छादित है और उसके अर्थ को ढका हुआ है, वो अनावृत होते ही हमें उस मंत्र का अर्थ भी समझ में आता है। तो जो ये छंद हैं, जैसे अगर हम गायत्री छंद को ही लें, गायत्री छंद में क्या है कि 3 चरण, उनमें 8-8 अक्षरों की गिनती होती है। तो 8 अक्षर जहां पूरे हो गए, वो एक पाद हुआ।
उन में आने वाले शब्दों का अन्वय जब हम करेंगे एक साथ होगा। आगे आने वाले 8 जो अक्षर हैं वो छंद का दूसरा चरण है, और और उससे आगे जो आएंगे 8 अक्षर वो तीसरा चरण। तो इन पादों में जो एक साथ शब्द आए हैं, जैसे अग्नि मीड़े पुरोहितम, पुरोहितम पर अगर विराम लें, यज्ञस्य, अब पुरोहितम के साथ व्याख्या करें कि या यज्ञस्य की देवम ऋत्विजम के साथ जोड़ करके व्याख्या करें, इसको किधर किया जाए। तो ये ऐसी व्यवस्था हमें छंद जानने से होती है। तो ये छंद भी मंत्र के अर्थ को जानने में आवश्यक हैं। जितने भी अपने बृहद देवता हैं, सर्वानुक्रमणी कोश इत्यादि हैं, शतपथ ब्राह्मण इत्यादि, उन सब में ऋषि, देवता और छंद, इनके ज्ञान होने के साथ ही यज्ञ इत्यादि करने का विधान किया गया है कि जो व्यक्ति इन चीजों को जाने बिना ही यज्ञ करता है, यज्ञ का मतलब भी वह नहीं जो आज हम लेते हैं कि केवल अग्नि में आहुति डालना। यज्ञ शब्द भी देव पूजा, दान, संगतिकरण और दानेशु, इन 3 अर्थों से बना है कि जहां पर देव पूजा, अभी समझा देव पूजा क्या थी, जहां हम प्रकृति की पूजा, प्रकृति की जहां पर पूजा का अर्थ यथा योग्य व्यवहार और दान देते हैं, और स्तुति, संगतिकरण, जहां पर मिलकर के कार्य किया जाता हो, ये 3 चीजें जहां हो रही हो वह यज्ञ कहलाता है। तो इन वेद मंत्रों का यज्ञ में प्रयोग होता है, अर्थात इन 3 चीजों में कहीं ना कहीं प्रयोग होता होगा, जिनको आज हम एक तरह से कहें कि लेबोरेटरी, जहां पर आप जो ज्ञान कहीं से सीखा उसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं आज साइंटिस्ट, उसको हम इंग्लिश भाषा में लेबोरेटरी कहते हैं। ऐसे ही जिन मंत्रों को जाना समझा रियलाइज किया, जिस ज्ञान को जाना समझा रियलाइज किया, उसको एक मंत्र, एक थ्योरी दी। वह थ्योरी कितनी सटीक है वह कुछ प्रैक्टिकल करने के बाद ही सत्यापित होती है। तो वो प्रैक्टिकल कहाँ की जाएगी, उसके लिए कहा जाता है यज्ञ इत्यादि किए जाते थे। बहुत सारे यज्ञों का वर्णन था। भारतीय संस्कृति यज्ञ प्रधान है। तो यज्ञ का मतलब वह एक पारिभाषिक शब्द उस प्रसंग में जहां अर्थ क्या है, उन ज्ञान का जहां पर हम एक व्यवहारिक पक्ष देखते हैं। तो इस तरह से वहां कहा गया है कि जो ऋषि, देवता, छंद और स्वरों के ज्ञान के बिना वेद मंत्रों का प्रयोग करते हैं, वह उसके पूर्ण फल को प्राप्त नहीं करते, क्योंकि जान ही नहीं पाएंगे यह जो है थ्योरी वह किस विषय को कह रही है, या इसका दृष्टिकोण, उसके पीछे के समझने का एक एंगल क्या है, किस अभिप्राय से उस विषय को समझना है। यह बिना जान के ही अगर उसका प्रैक्टिकल करेंगे तो जो उसका निहितार्थ है वह समझ में नहीं आता है। ऐसे ही स्वर जो हैं वो भी, जिसका एक उदाहरण देख भी चुके थे हम कि उदात, अनुदात, स्वरित, यह मुख्य स्वर हैं। आगे स्वरित के भी भेद हैं, उनके और भेद प्रभेदों के साथ जब तक स्वर का ज्ञान नहीं होता है तब तक भी हम वेद मंत्रों को नहीं समझ पाते। एक तो इनका बोलने में भी प्रयोग होता है कि किसी सस्वर वेद पाठ इत्यादि आपने सुने होंगे। उसके साथ साथ ये स्वर बोलने में इसलिए लाए गए कि ताकि हमें अनायास ही उसमें आने वाले उतार चढ़ावों का पता रहे और सामने उसको पढ़ने से उसके अर्थ का ज्ञान हो सके। तो जैसे उदात्त जो चिन्ह है, उसका कोई चिन्ह नहीं है, पर उदात्त जो स्वर है वह मुख्य है। वह जिस वर्ण पर होता है, ये स्वर इत्यादि स्वरों की व्यवस्था है। स्वर जिनको अच, अ, आ, ई, उ, ये जो व्यंजनों में स्वर हैं उनमें जो रहती उनके विशेषण होते हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित होना। तो उदात्त वाला वर्ण उसकी प्रधानता होती है। वह प्रकृति में है या प्रत्यय में, जो शब्द बने हुए हैं उसके वह प्रकृति के अंश पर है या प्रत्यय के अंश पर है, इसके आधार पर प्रत्यय का भी अर्थ है, प्रकृति का भी, धातु का भी अर्थ है। किस अर्थ की प्रधानता है यह जानने के लिए हमें स्वरों का ज्ञान होना चाहिए। तो आज की इस सत्र में जो हमने पूरा 1 घंटे का सुना, जिसमें मुख्य रूप से चर्चा हम कर रहे थे देवता और ऋषि, यहां से आपको यह ध्यान में रखना है कि वेद के मंत्रों की व्याख्या करते हुए वैदिक जो ऋषि हैं और जो देवता हैं उनका अभिप्राय है कि यह एक पारिभाषिक शब्द हैं। देवता का अर्थ क्या है? उन विषयों का, मंत्रों का विषय,
और ऋषि का अर्थ क्या होगा? उन मंत्रों का साक्षात्कार करने वाले। वह नाम किसी व्यक्ति का भी हो सकता है या उस विषय में वर्णित जो दृष्टिकोण है उस पर भी रखा जा सकता है। इसलिए जैसे किन्हीं किन्हीं मंत्रों के कच्छप इत्यादि ऋषि हैं, कछुआ, कोई कहेगा कि ये आक्षेप करते हैं कि आपके मंत्र कछुए ने लिखे हैं, अगर हम लिखने वाला अर्थ ले, वहां पर कछुआ अर्थ नहीं है। कछुए की जो गुण विशेष हैं उस दृष्टिकोण से जब किसी विषय को देखेंगे उस अभिप्राय से देखना। यह संन्यास प्रकरण में प्रयोग होने वाले मंत्रों का जो ऋषि है वह कच्छप है, तो एक उसकी क्या है कि वह पहचान क्या है कि वह अपनी इंद्रियों को संयमित रखता है। जब भी कोई ऐसे भय का कारण कोई उसके ऊपर प्रहार करता है तो वह अपनी इंद्रियों को सिकोड़ लेता है। इस दृष्टिकोण से जब उन वेद मंत्रों को देखा जाता है तो ऐसा लगता है कि वह किसी योगी के विषय में बताए गए हैं। सन्यास के क्या कर्तव्य हैं, क्या धर्म है, उन विषयों में उनका वर्ण ऋषि मिलते हैं। तो इस तरह से ऋषि एक पारिभाषिक शब्द जिसका अर्थ है मंत्र दृष्टा, और देवता यह भी एक पारिभाषिक शब्द जिसका अर्थ है उस मंत्र का विषय। और ये मंत्र के बाद शब्द जो मंत्रों में भी आते हैं उसके अंदर, वहां भी उनको समझने के लिए पहले हमें निरुक्त का ज्ञान होना आवश्यक है और व्याकरण का भी। उसके आधार पर हम वेदों के वास्तविक निहितार्थ को समझ सकते हैं। तो आगे की इन चर्चाओं में हम छंद और स्वर का और विस्तार से देखेंगे कि किस तरह से वह वेद के मंत्रों में सहायक रहे हैं। आज हमने ऋषि और देवता को जाना। धन्यवाद।